I would like to welcome Tata Rao to the Biju Janata Dal. She will be joined as a simple member of the party. You know that she has been an IAS officer and has held several important positions in that office, including her last position, which was to look after many women in our state. I'm sure that as time passes, she gets used to her. She will कैमरा पसीला I would like to repeat again for the information of the media that of course I will be leading the Biju Janata Dal in the next elections. I want to make that very clear. Thank you very much. सेवा आज विजु जनता दल में सामिल है मत से सुजोग नेतृत्व में ओडिशा माटी सेवा करने पुणी थे मिली प्रभु जगन्नाथ कृपा एवं दलर और लक्ष लक्ष कर्मी आशीर्वाद निष्ठा और समर्पण सहित काम करी। धन्यवाद। फिर कथा fortunate to have the opportunity to work under Shri Naveen Patnaik's leadership and serve the people of Odisha for the last 24 years. Today again, I am blessed to have this opportunity once again to work for the people of the state under the leadership of Shri Naveen Patnaik sir. With the grace of Lord Jagannath and the blessings of lakhs of Biju Janata Dal workers and its leaders, I shall continue to work for Odisha and her people with complete dedication and commitment under the leadership of Shri Naveen Patnaik. हिंदी में बोलते हैं। अभिज्ञता दल प्रयोग कर भविष्य आम दलर गोटे प्रतिष्ठा ट्रेडिशन रही विभिन्न क्षेत्र जो मैंने अच्छा प्रतिभाशाली लोक से स्वागत करता दल अनेक गाँव देखो आम मैंने कहीं नेता ही जन्म नहीं जीवन में विभिन्न क्षेत्र में काम कर जनसाधारण नेतृत्व मान अर्थ कौन से शिखिता सी मुझे दिल्ली जाती मोर चेन्नई में गोटे कन्फरेन्स भाषण देवार मुझे परिवर्तन आज आसी जो नेता मैंने जदि कौन असुविधा न था समस्त चेष्टा कर आसते स्वल्प नोटिस मिलता काली सार अफिस फोन होता आज तेणु आम मैंने कौन गोष्ठी विरोध कर आम दल गोष्ठी लोक विभिन्न मतामत थी गणतंत्र लक्षण विजु जनता दल लोक निजर मत अच्छी कि आम दल गोष्ठी विरोध गोटे सर्वोत्तम नेता दल होती श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एथेर आपंकर द्वंद्व अच्छी ना आम मान द्वंद्व अच्छी ना ओडावासी मन आपण मैंने कहते असंतुष्ट अच्छे कथा मुझे Gracias.
सब तलुकर बुम डाउन दलରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଉତ ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା ଜାରି ରଖିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଯେଉଁ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଶାସକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଜନତା ଦଳ ପୂରଣ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନତା ଦଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ